Anuji, can you see the screen now with the slide? Yes, sir. Bismillah nazar aa rahi hai. Okay, that's great. So this is the first slide in which Bismillah is written. So we start our lecture, 1 hour lecture today. So Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to today discuss the evolution of robotics. It is again a continuation of the lecture which we started yesterday, which was about the introduction of robotics. So more or less we are going to talk about some general terminologies today, and as we did yesterday. So this week will culminate with this lecture with an introduction to the robotics. So we go on. So this is a diagram which has been taken from a research with the name The Evolution of Robotics Research. So this is the diagram taken from this paper. This is written by Garcia, and he actually has written a very comprehensive paper which shows us different robotic development over a period of time. So I've taken this picture from that research. So if we see on the left hand side here on the y-axis, we can see that we have different types of robots which are mentioned here. The robotic manipulators, then biologically inspired robots, and then mobile robots. And on the x-axis we have the timeline in terms of years. So if we look at this diagram, so we can very clearly see that 60s was the era when people started to use industrial robots. We had discussed this yesterday also, that the industrial robot was made by General Motors in collaboration, and then they started using it on their assembly line. So that was in fact 1954, I presume. So 60s was the era when the industrial robots then they came in. So see, until 1990, this industrial robot era, this went on, and then it was linked with flexible automation. So flexible automation is something which is a type of automation which we will study in the second module of this course also. So in fact, this industrial robotics, or the industrial robots, they were coupled with flexible automation, and then we can see that we started using these with medical robots, then with assistive robots, and then other kind of applications. So all these industrial robots, these were used for these kind of applications. So if we see, this is something which we have termed industrial robots as manipulators. I'll just write it down here so that we do not get confused. So these are actually manipulators. And what do we mean by manipulators? These were the manipulators which were fixed at one place, and that these robots can have number of degrees of freedom, which we discussed yesterday also. That was a configuration of Puma, which had 6 degrees of 6 degrees of freedom. So these are the manipulators or the industrial robots. And then in 1968, the mobile robots they came in, and people started using some underwater robots, then some exploratory robots, surveillance, something like this. So exploratory, then underwater surveillance, then domestic robots. See, in time frame of around 2000 to 2005, there was a development of domestic robots. So domestic robots, we are going to look at those also during the course of lecture today. So these are something which have been used by people in day-to-day, resolving day-to-day issues, or helping or assisting people in the domestic field. Similarly, then humanoids and which are called the biological inspired robots. So humanoids and walking robots, they also
came in, and we have seen some humanoids and robot and some walking robots yesterday in the lecture, which were, can somebody name those for me? Do you remember those? What were the humanoids? What was the name of the humanoid robot which we saw? It was Asimo. It was Asimo, made by Japan, and Honda made it for us. And then, what were the walking robots? Am I audible to you? Yes, sir. Okay, if I am, then somebody to please respond. What were the walking robots, legged robots, which we saw yesterday? Does anybody remember? I showed you a video of four-legged robot that is called Big Dog. That is called Big Dog, and it is Yes, made by. sir. जी, किसने बनाया था ये? सर वो नहीं याद, देखा तो वीडियो देखी थी। Boston Dynamics. Boston Dynamics, very good. So I request you to please go by when you go back home. Please go through the lectures once at least once, so that you remember that whatever we have studied that stays back into your mind. So I would request you all to please go through these lectures when you go back home. It will not take much time. And you will be able to remember things quite easily. So we had discussed all this. So this is the study, or this is the research which has been carried out by Garcia in 2007, and Garcia and some of his colleagues. So and then they came up with this research. So I took this from there. Okay. Now next, let's move on, and then we are going to talk about another research which has been carried out by Shaheen, and that has been done in 2014, and this actually aims at describing some myths and facts about robotics. So in the research they carried out, they have defined these five myths and facts. So the first myth is that robotics are intended to eliminate jobs. We discussed this yesterday, that this is an opposing comment which is given by people for the roboticists, that robots are when they come into the field, then they eliminate jobs. So what the robotics people say, Kalam ne kya kaha tha, what do they say about this? जी, सर वो जॉब्स ले लेंगे और दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। नहीं ठीक हो गया, लेकिन what is the counter argument which we discussed yesterday? सर मार्स पे जो यूज होते हैं रोबोट्स, उसके लिए उधर ह्यूमन मिशन Robots are to assist humanity. ये हमने कल एक आर्गुमेंट किया था. So myth ये है that the robots, they will eliminate job, but people say no, the robots are not going to eliminate job, rather they are going to assist the humanity. And what will be the outcome of this? You will have more accuracy, increased quality, and increased speed of production. Number one, increased speed of production, and which will actually lead to higher production rate. ठीक है. सो ये जो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल रोबोट्स को, हमने लिंक किया था विद द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन अभी पिछली स्लाइड के ऊपर. तो इनफैक्ट ये जो हायर प्रोडक्शन रेट और इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर एक्चुअली द terms which are used in automation of industry. So the answer to the myth is that
the robots, they actually assist humanity. They do not overcome or eliminate jobs. And then the second point is written here as manufacturing and logistics must adopt robots to survive. Now, this is a fact. Now, can you link it with the myth number one? Can somebody link it with that? मैंने अभी ये जो चार चीजें उसके साथ लिखी हैं myth के आंसर के तौर पे. So, can you link the second point, which is manufacturing and logistics must adopt robotics to survive? G, can somebody link it with this? No? सर मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि एक आपके जो प्रोडक्ट्स जो फिनिश होंगी रोबोटिक्स से, इस हिसाब से आपको रोबोटिक्स करनी चाहिए. ओके, देखिए बिल्कुल क्लियर आपकी बात. जी ठीक है. देखिए नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? चीजों को बनाना. लॉजिस्टिक्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन. सो सबसे पहले तो हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की. तो अगर मैं फैक्ट्स में बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वही चीजें ये जो मैंने यहां लिखी थी. हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन रेट मैं यहां लिखता हूं. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटी. देन तो क्या चीज है? इसने जो हायर प्रोडक्शन रेट है, इसने आपकी मार्केट डिमांड को पूरा करना है. ठीक है. सो दिस इज रिलेटेड टू market demand. So if you do not automate or do not involve robotics into your manufacturing, so you won't be able to cope up with the market demand. So you need to have a higher production rate. But at the same time, when you are competing in the market, so you need to have quality as well. So the manufacturing aspect of this or the robotics is that the manufacturing setups perforce have to go into automation with some robotic tools so that they can give higher production at a higher quality, and they can number one market demand को meet कर सकें, and number two they can compete in the terms of quality. Then the second term जो हमने यहाँ पे देखी, that was logistics. So थोड़ा सा मैं logistics की बात अब मैं कर देता हूँ. So logistics क्या है? Logistics से क्या किस चीज से related है जी? Can somebody give me one or two sentences for logistics? सर सामान प्रोवाइड करना. प्रोवाइड करना. गुड. सो क्या है? लेट्स सी. मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है. देन मूवमेंट ऑफ materials on shop floor. Then transportation of finished good. ठीक है. ये मैंने आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि लॉजिस्टिक्स में क्या चीज आती है. सो इफ यू आर नॉट इन टाइम for transportation of raw materials to your shop floor, so it means that your production rate is going to go down. So you won't be able to make up the orders which you have received. So this is one. Then within the shop, you need to have, if you have adopted a flexible manufacturing or an automated manufacturing system, so timely availability of that material onto a machine would be a necessity. So if you are not managing that time, so it means that your machine remains idle for a time in which the raw material is not given to the machine. So you are, again, that is going to affect your production rate. And then transportation of finished good to the customer. So all these things, they are related with time. And then with time, you need to have the production which is to be done, and the precision and the quality which the customer demands from you. Okay. So this is something which is linked with your
robotics. Then we go on to the next myth, which is autonomous robots. They are too slow. Yes, we know it. Why they are slow? Because there is a lot of computation involved in this. So in autonomous robots, there are a lot of computational complexities, or a lot of computation is involved, in which they have to find out their way by themselves, and they have to go on to a path in which some paths are planned for them, or they have to navigate into an unknown world. So definitely the calculations and the movement, they remain slow. So this is a fact, and on which people now are working to overcome this fact. And people now, one of the example was, we have talked about autonomous cars, and which research organization is working on autonomous cars these days? And what do? They organize a, Tesla. okay. What do they do? A research organization. We talked about it yesterday, that they arrange a competition also. Does somebody remember? Okay, that was DARPA challenge. So DARPA is the organization, and they every 2 years probably they carry out this competition. So then the next step is another a myth, which says that robots are too expensive. Not anymore. The robots are now becoming less expensive, because the technologies they have been advanced, they have advanced, and then the day-to-day problem, or the assistive robots, they are not very expensive now. Like you can have a robotic vacuum cleaner, which is available for a very minimal price, and you might have seen that in the टीवी ऑल्सो, उसका वो जो एक वो एड्स वगैरह आ रहे हैं. सो you can have a vacuum cleaner robot which can clean the room for you, and not bothering you at all. So the robots are not now very expensive, but definitely the robots which involve technology, which involve like surgical robots, they are expensive. So but people are still working on it, so that they can be that they can be made less expensive for the use of humanity. And then robots are difficult to use. Yes, you need to have a specialty in handling robots. So this is a fact. So what you need to have is that you need to have the technology plus handling of robots. Okay, so they are now difficult to use, but still people are using it, and then when you get used to it, then it becomes easy. But definitely this remains a fact, that since it's a machine which is to be used, so unless you get expertise, or you master yourself in the use of a machine, until then that remains difficult for you to use. Okay, so we move forward, and now we talk about the enabling technologies. This is the automation pentagon. So again, this is something which is going to tell us. This diagram is going to tell us that what is an automation. So this is the pentagon automation. So what happens? So I'm going to now start from the end point. End point is that if I'm using a robot, or if I'm using an automated machine, so what would be the not end, I would not say end product, but the end of this cycle would be an actuator. An actuator would do what? An actuator can be a gripper. A gripper, maybe a welding torch. Okay, and ये मेरा end effector है. This is the end effector. और इसको जो चीज ड्राइव करेगी, that would be an actuator.
ठीक है. So बिल्कुल एंड के ऊपर for any particular automated process there is going to be an actuator which will be given some commands with the from the processor. So which will be given some command by the processor, और ये इस processor को जो command आपने देनी है that would be coming from the sensor. So you will have a sensor which is going to maybe a camera, and the camera would give a signal to the processor. Okay, now I can see something which is to be picked up, and then the processor gives the command to the actuator, and the actuator is linked with gripper. So the moment actuator moves, the gripper closes and picks up something. So this is how it is going to go. So sensor, processor, and actuator. Now this processor is linked with software. So you need to have a software which has to be executed through this processor. So here comes the software which is required to be executed by the processor. And if you want to go in the teleoperated domain, so you need to have then networks on which you can pass on the instructions. So how these networks they work. So if I'm sitting here and I'm controlling a robot which is outside my room, so actually that is the network between the robot and the controller which I have with me, the controller will have the processor, and the sensor would be on the robot. From there, through a network or a communication, this is actually communication. Let me just put the word here, which is related to the network. So it is the communication. So there is going to be a communication of the sensor with the processor through some communication. Software is installed on the processor, and then this is how the thing would look like when we talk about Pentagon of automation. So now I'm going to link all of this with something which is known as mechatronics. So I am now linking this Pentagon of automation with mechatronics. That what do we do in mechatronics? So mechatronics is a combination, it's a combination of mechanics. सबसे पहले मैं बात करूँगा mechanics की. So it's a combination of mechanics, then design. ठीक है? So this is purely mechanical domain. So this is purely mechanical domain. ठीक हो गया? Then electronics, microcontrollers, electromechanics. Let me just put it here again. थोड़ा सा यहाँ पे मुझे change करना चाहिए इसको. This is purely electrical domain. This is electromechanics, so this is electrical plus mechanical domain. And this is software या computer domain, which is informatics. So अब अगर आप इसको देखें, अब आप इसको analyze करें. So to become a roboticist, you do not require to be a mechanical engineer or a computer engineer or an electrical engineer. So what you need to have, that you need to have the knowledge of all these domains so that you can go with the robotics. So उसके लिए जो हम कहते हैं कि the mechatronics का जो discipline है, which is also termed as system engineering. Another term given to the multidisciplinary engineering. Actually, we don't let's not call it mechatronics or system engineering. It's a multidisciplinary engineering. And the other day I was just discussing with some people that the chemical engineers, they also go into this domain of robotics now. They are coming into this domain of robotics, and they take some courses from mechanical, electrical, and then they
come into the domain of robotics. So there was a discussion going on. So this is how we are now shifting from a particular domain to a multidisciplinary domain. So if you just if we discuss this, that what are or what type of systems our cars have these days. So no car at the moment in the world or even in Pakistan, it is purely mechanical or it is purely electrical. It is a combination of electrical and mechanical domains, and with the uh, with the introduction of onboard computers, ये जिसमें हमने आपने देखा होगा EFI systems लगे हुए हैं, which have onboard computer. They have lot of sensors into the put into the engine or on the vehicle. So all these systems they are combined together and they make a car. So it's a multidisciplinary प्रोडक्ट. अगर मैं सिर्फ एक कार की बात करूं, सो अभी जैसे किसी एक स्टूडेंट ने टेस्ला का जिक्र किया था, तो टेस्ला इज मेकिंग कार्स, टेस्ला इज मेकिंग इलेक्ट्रिकल कार्स नाउ, एंड दे हैव all the people working with them of multidisciplinary domain. So this is how we can link the automation with system engineering or mechatronics. जी, यहाँ पे कोई अभी तक सवाल है तो काइंडली बताइए. We have 15 minutes left. सर ये CNC वगैरह भी रोबोट होंगी? जी, एक वन एट अ टाइम प्लीज, ताकि ना मुझे बात समझ आए. जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई किस पॉइंट पे जाके, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक सिंपल मशीन है जिससे एक वॉशिंग मशीन है और उसमें थोड़े स्मार्ट कंट्रोल्स हैं, उसको और एक रोबोट को कहाँ पे आके मतलब वो किस उनकी तरह सेपरेशन क्या होगी, मतलब कहाँ पे? जी, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. अच्छा देखें, क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग्स विच कैन ऑटोमेट योर वर्क. लेट्स सी. सबसे पहले आप देखें, अगर आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, समथिंग लाइक 7 to 10 years back, so there was a fuzzy controlled washing machine which was introduced. अगर आपको याद हो, या शायद आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे, बट फजी कंट्रोल वॉशिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. पाकिस्तान में जो थी वो हमने देखी फजी कंट्रोल. सो क्या था वो वॉशिंग मशीन? जो क्या करती थी, जो खुद जब आप उसके अंदर कपड़े डालते थे तो वो उनके वेट का सेंसर उसका वेट सेंस कर लेता था कि इतने कपड़े, इसके लिए इतना पानी चाहिए, इसके लिए इतना साबुन चाहिए, और इसको इतने टाइम के लिए मैंने घुमाना है, इतने टाइम के लिए इसको वॉश करना. सो क्या चीजें हैं ये? वो सारी चीजें हैं जो आपने एक इंटेलिजेंस एक मशीन के अंदर डाली. अब आप उसको रोबोट कहना चाहें, आप उसको रोबोट कह लें. आप उसको एक ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन कहना चाहें, आप उसको एक ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन कह सकते हैं. सो जो एक रोबोट के साथ हमारा जहन में एक जो चीज आती है ना, कि हमारे जहन में फौरन रोबोट के साथ एक ह्यूमनॉइड आता है और एक हमारे पास इंडस्ट्रियल रोबोट आता है. लेकिन अगर मैं उन टेक्नोलॉजीज को देखूं जो उन रोबोट्स में, चाहे वो ह्यूमनॉइड है चाहे वो इंडस्ट्रियल रोबोट है, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज हमारी हर तरह की मशीन्स में आजकल यूज हो रही है. क्या? जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, क्या था? सेंसर्स हैं, प्रोसेसिंग है, एक्चुएटर्स. मेन मैंने आपको जो दिखाया है, अगर आप पेंटागन ऑफ ऑटोमेशन को दोबारा देखें तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड प्रोसेसर, एंड देन उनको हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं. सो देयर कैन नॉट बी अ लाइन एक्चुअली कि जी ये रोबोट है और ये मशीन है. सो रोबोट इज ऑल्सो अ मशीन. ठीक है भाई, इनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ आप यूज करते हैं. जी, इज दैट अंडरस्टूड? आई होप द आंसर इज ओके फॉर यू. यस सर, थैंक यू सर. Okay, let's move forward and now talk about some classification. So I'm going to hurry it up now because we are left with about 10 minutes time now. So we are going to talk, we have industrial robots. We have already talked about those which are manipulators. हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं. फील्ड एंड सर्विस रोबोट्स में आपको याद होगा कि हमने इसके अंदर जो बातचीत की थी वो कुछ मोबाइल रोबोट्स की थी. ठीक है, और यही मोबाइल रोबोट्स अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वो क्या हैं? कोई व्हील्ड रोबोट्स हैं जो कि जैसे इंटेलिजेंट व्हीकल्स हैं, देन सम वॉकिंग ह्यूमनॉइड्स हैं, क्लाइंबिंग या क्रॉलिंग रोबोट्स हैं. लेट्स सी, इसके अंदर हमने अंडर वाटर
रोबोट्स की बात की थी, इसकी एक वीडियो भी मैंने आपको कल दिखाई थी। सो यहाँ पे देन एरियल रोबोट्स हैं जिसमें आपको हम कहते हैं कि ये जो क्वाडकॉप्टर्स वगैरह हैं, दीज कम इन, इसमें फिक्स्ड विंग भी आ जाते हैं। देन मेडिकल रोबोट हैं जो कि सर्जिकल रोबोट्स हैं। देन एग्रीकल्चर रोबोट्स हैं, आपके पास सीडिंग मशीन्स हैं, आपके पास हार्वेस्टर्स हैं। सो ये सारे जो हैं, सॉरी मैं थोड़ी सी हैंड राइटिंग गड़बड़ होती जा रही है तेजी में, सो लेट मी जस्ट राइट दीज हार्वेस्टर पार्ट अगेन। सो वी हैव हार्वेस्टर्स एटसेट्रा। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस वक्त फील्ड या सर्विस रोबोट के नाम पे यूज़ हो रही हैं। देन सम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल रोबोट्स हैं, ये आपके पास गेमिंग के लिए educational or entertainment robots. So this is how we classify. So let's look at them one by one. So if I talk about the industrial robots, so ये आपने देखा ये manipulators हैं, आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हमने कल भी डिस्कस किए थे. So these are manipulators. This is also a manipulator. This is also a manipulator. So industrial robot है, ये जो है this is called SCARA. This is called SCARA. ये SCARA configuration है actually for a robot. इसको भी हम पढ़ेंगे, इसकी जो configuration है during this course. So ये मैनिपुलेटर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स के नाम पे हम इनको पढ़ेंगे और इनके बारे में बातचीत करेंगे. सो हमारा ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है दैट वुड बी विद द इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिसके अंदर के हम इनकी काइनेमैटिक्स, फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमैटिक्स और इनकी वेलोसिटीज़ और जॉइंट वेलोसिटीज़ के बारे में बात करेंगे. सो ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, यही वही आप जैसे कल मैंने आपको ये दिखाया था, ये वही कॉन्फ़िगरेशन आपको इस वक्त नज़र आ रही है जिसमें रिस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक मूवमेंट नज़र आ रही है. तो अगर मैं रिस्ट के अंदर यहाँ 3 मूवमेंट्स डाल दूँ, इफ़ आई पुट 3 मूवमेंट्स हियर और अ रेवोल्यूट जॉइंट हियर, तो व्हाट वुड दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकम? अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल जॉइंट डाल दूँ, फिर इसको क्या कहेंगे हम? ये कौन सा वाला रोबोट बन जाएगा? Puma, sir. Puma. Very good. So if I add 3 if a spherical joint here, so this becomes Puma. So कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस वक्त? ये 4, sir. 4. गुड. हमने हर मोटर के साथ, हर मूवमेंट के साथ एक फ्रेम अटैच किया हुआ है. सो जितने आपको ये फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, ये दे आर अटैच विद वन मोटर. इसका मतलब है कि इसके अंदर ये मूवमेंट हो सकती है. ये अटैचमेंट फ्रेम्स की कैसे होती है, ये हम अभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स. सो मोस्टली ये सीरियल आर्म कहलाते हैं विच हैव 6 आर्टिकुलेटेड कॉन्फ़िगरेशन. देन इनकी जो एक्चुएशन है, दिस कैन बी इलेक्ट्रिक और इट कैन बी हाइड्रोलिक आल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करें. मोस्टली इट इज इलेक्ट्रिक. हाइड्रोलिक जो है ये आपको बहुत कम मिलेंगे, मोस्टली इट इज इलेक्ट्रिक. बट देन अ रोबोट नीड टू हैव अ वर्क सेल. ये जहन में रखिएगा कि whenever we are going to talk about a robot, an industrial robot, so it needs to have a work cell. और उस वर्क सेल में उस वर्क सेल में क्या चीज़? एक आपका मैनिपुलेटर विच इज़ रोबोट, देन उसके एंड इफेक्टर्स, फिर कोई कन्वेयर्स होंगी जो उस तक चीज़ों को लेके आ रही होंगी. देयर हैज़ टू बी अ सेंसर विच शुड सेंस कि एक चीज़ मेरे पास आ गई है, नाउ द रोबोट हैज़ टू पिक इट अप, सो इट इज़ गोइंग टू कम ऑन टू अ conveyor and the sensor is going to sense it that the raw material has arrived, and then robot is going to pick it up. Then programming. So programming जो है वो ज़रूरी है to get things done from the robots, and then once it is set up, then it runs without major deviation. So ये वो जो मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ कि when you program a robot to do a certain task, so it can repeatedly do it without any fatigue and with precision. ठीक है? Need calibration. So after some time, definitely जो आपके mechanical parts हैं, when they wear out, so it needs a calibration. And then online and offline programming. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जब हम अगर करनी पड़ती है हमें, तो हम क्या करते हैं कि वी नीड टू स्टॉप द रोबोट और उसको प्रोग्राम करना. दिस इज ऑनलाइन प्रोग्रामिंग. ऑफलाइन क्या है कि मैं अपना प्रोग्राम बना लेता हूँ अलग
रोबोट एक काम कर रहा है, लेट्स सी, अगर आप इफ यू कैन लुक एट द कैमरा, सो एक रोबोट है जो कि इस काम के लिए प्रोग्राम हुआ है कि यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, यहाँ से उठाना है, तो ये किया जा रहा है। एंड देन देयर इज अनदर thing which is required to be done by this which is to be done by this robot के उसने उठाने रखने के बाद देन एक और काम है कि उसने इधर जाके किसी चीज को स्क्रू को टाइट करना है। सो दिस इज अनदर प्रोग्राम। सो मैं क्या करूंगा, ये वाला काम मेरा चलता जा रहा है एंड देन ऑफलाइन मैं बैठ के एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें कि इस रोबोट ने यहाँ जाके एक स्क्रू को टाइट करना है। सो जैसे ही मैं वो प्रोग्राम बना लूंगा, मैं इसके ऊपर उसको डाउनलोड करूंगा प्रोग्राम को और ये वाला काम करना शुरू। सो आई एम सेविंग टाइम। सो ऑफलाइन प्रोग्रामिंग ज़हन में रखिएगा कि ऑफलाइन प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट टू सेव टाइम व्हाइल यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू another, तो ये ज़हन में रखिएगा। So this is offline, and then we are going to talk about kinematics, dynamics and control. So मैंने आपको कहा था कि हम we are in the course, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा emphasize, या rather I would say कि सिर्फ इसी के ऊपर हमारा emphasize होगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ही है। So हम इसकी forward kinematics की बात करेंगे, हम इसकी inverse kinematics की बात करेंगे और हम इसकी जॉइंट वेलोसिटीज की बात करेंगे। ठीक है, सर रोबोट डिजाइन भी करेंगे कोई? सॉरी सर कोई रोबोट डिजाइन करेंगे हम कोर्स में? रोबोट डिजाइन से क्या मुराद है आपकी? सर यही यानी कि फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स, इनवर्ट काइनेमैटिक्स वगैरह लगा के उसका एक मॉडल बनाएं या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं मॉडल। मैं आपको अभी मैंने इस तरह का कोई आपके लिए प्रोजेक्ट तो नहीं सोचा, बट ये आइडिया आपका अच्छा है कि व्हेन यू आर एबल टू डू दिस काइनेमैटिक्स तो यू कैन मेक वन। ठीक है, मैं इसके लिए कोई प्रोजेक्ट ज़रा डिज़ाइन करता हूँ जस्ट टू गिव यू अ हैंड्स ऑन, और अगर लेट्स सी मैं उस तरह से हैंड्स ऑन नहीं भी कर सके तो मेरे पास सॉफ्टवेयर ज़रूर मौजूद है जो लेकिन उसके अंदर काइनेमैटिक्स जो है वो ऑलरेडी डिजाइन है। ओके, दिस गिव्स मी एन आइडिया कि अगर मैं आपको थोड़ा सा जो रोबोटिक्स का टूल बॉक्स है मैटलैब का, मैं उसका एक्सपोजर भी आपको दे सकता हूँ जिसमें कि आप ये खुद इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गुड इनफ। मेरा ख्याल है दिस मैटलैब का एक प्रोजेक्ट जो है ना दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कोर्स, जो विच कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ काइनेमैटिक्स और उसकी एप्लीकेशन। सो ठीक है, गुड इनफ। सो यू विल बी एबल टू डिजाइन अ मैनिपुलेटर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। ठीक है जी, ये आई विल इंक्लूड दिस इन द, सो आई एम श्योर यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दैट, क्योंकि वो जब आप खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, सो आप उसको फिर एंजॉय करते हैं। ठीक है जी, सो ये मैं आई विल इंक्लूड दिस इन द कोर्स। ओके, सो नाउ गोइंग ओवर फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू व्हील रोबोट। सो ये आपको अगर देखें तो जो व्हील मोबाइल रोबोट है, दिस इज केपेबल, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ व्हील मोबाइल रोबोट इज केपेबल of locomotion on a surface solely through its wheels assemblies which are mounted and in contact with the ground. ठीक है, so a wheel assembly is a device which allow or provide relative motion, ये ज़हन में रखिएगा, relative motion between the mount and the surface. So there is a relative motion between the surface and the mount, और वो mount के दरमियान की चीज़ लगी हुई है वो wheels। So अगर आप ये ऊपर वाली डायग्राम ऊपर वाली देखें ये वाली, तो इसके अंदर आपको ये ऑटोनोमस कार नजर आ रही है। ठीक है, और अगर आप इसमें ये आपका मार्स रोवर है, सो दिस इज योर मार्स रोवर। ठीक है, सो दीज आर दी मोबाइल रोबोट्स। देन वी हैव robots for the healthcare, and if you look at this picture, so you can see that this is the doctor's console, and the doctor is not looking at the patient. This is the robot which is carrying out surgery for the doctor, but it's just a cartoon. You can see that probably the robot is not planned or not programmed properly, or rather the doctor has
has become angry with the patient, so this robot has started beating the patient. But this is how the surgery is going on. That goes on that the doctor sits on the console, and the manipulators and the artifact they come in contact with the patient and they carry out surgery. So these actually help the doctors in specialized activity. They allow to work with more precision. सो जो डॉक्टर के एक हाथ के अंदर एक प्रिसीजन जो कि एक ह्यूमन बीइंग या एक ह्यूमन एलिमेंट बीच में होता है, दैट इज एक्चुअली रूल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. सो वो जो एक बिल्कुल एक प्रिसाइज मूवमेंट और प्रिसीजन है, दैट कैन बी अचीव. सो आप देखें कि इस वक्त आई के जितने आप देखें हॉस्पिटल्स हैं, मशीन, हर तमाम लोग मशीन्स यूज कर रहे हैं. डॉक्टर्स जो हैं दे आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, एंड इट हैज बिकम सो इजी. मैंने अभी बड़ी रिसेंटली मैंने अपनी मदर की दोनों आईज में लेंस डलवाया है. इट जस्ट टेक्स 15 मिनट्स. एवरीथिंग इज डन विद द मशीन. सो जो डॉक्टर है उसका क्या काम है कि वो उस मशीन को पास लेके जाता है, उसको अलाइन करता है, देन ही प्रेसेस द बटन और वो मशीन सारा काम कर देती है. सो जो डॉक्टर की प्रोसीजन है, डॉक्टर की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें उसकी एक्सपर्टीज कम होती जा रही है. एंड मे बी इन सम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये देखें कि यार जो सर्जरीज हैं वो सारे एक ऑपरेटर कर रहा है जो कि डॉक्टर भी नहीं है. मे बी इतना अगर हम डेवलपमेंट हो जाए प्रिसीजन की और मशीन्स की, सो वी माइट कम अक्रॉस थिंग्स लाइक दिस इन वेरी नियर फ्यूचर. सो मैं आई वॉज अमेज्ड. मैंने अपनी मदर का जैसे आपसे जिक्र किया ऑपरेशन उनका करवाया है, लेंस डलवा रहे, तो वो सारी जो इंसियन है वो भी मशीन कर रही है, लेंस भी वही डाल रही है. इवन स्टिचेस की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, जितनी वो प्रिसाइज इतनी बारीक होल करके वो उसके अंदर से लेंस डाल देती है. सो एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन नाउ. What happens actually in robotic surgery? So जो conventional surgery है उसमें क्या है कि सर्जन जो है ये वाला है, दिस इज द ट्रेडिशनल, ये आपको जो ये नजर आ रहा है ये वाला ट्रेडिशनल में क्या है कि जी सर्जन है और सर्जन से वो अपने टूल यूज कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है. सो ये कर रहा है और टूल से वो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यू. तो टूल के थ्रू इट कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यू. सो अगर मैं देखूं कि यही सर्जरी विद द हेल्प ऑफ रोबोट की जा रही है, तो सर्जन जो है वो एक मास्टर कंप्यूटर है, देन स्लेव कंप्यूटर है. अगेन मैं इसको स्लेव इसलिए कह रहा हूँ, कंप्यूटर इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों मशीन्स हैं. सो वो ये प्रोसेसिंग करता है, स्लेव को देता है, स्लेव से टूल पे जाता है और टूल कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यू. ठीक है. और सर्जन जो है ये जरूरी नहीं है. इफ यू लुक एट दिस, ये डायग्राम देखें तो ये डाविंची है जो हमने कल इसका जिक्र किया था. सो दिस इज डाविंची. डाविंची सर्जिकल रोबोट है, सर्जिकल सिस्टम. ठीक है. सो ये देखें, हियर इज द सर्जन, ये सारी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है और ये आपका रोबोट है और ये पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. सो ये सर्जन यहाँ से बैठ के और ये सारा कर रहा है और सर्जन इज नॉट इन कांटेक्ट विद द पेशेंट, रादर ही इज नॉट लुकिंग एट द पेशेंट, ही इज जस्ट लुकिंग एट हिज ओन कंसोल. और सर्जरी जो है वो यहाँ पे हो रही है. सो ये रोबोट्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर द सर्जरी. देन कुछ एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर लेते हैं क्विकली कि ऐसे जो कि रोबोट्स या ऐसे व्हीकल्स हैं, अगर वो इफ दे आर लाइटर देन एयर तो उनको हम कहते हैं ये एयर शिप्स हैं, ये हॉट एयर बैलून्स हैं. हैवियर देन एयर है तो ये फिर फिक्स्ड विंग है, जैसे आपने हॉबीइस्ट को देखा होगा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट विद रिमोट कंट्रोल. सो आरसी आपने देखे होंगे. देन फ्लैपिंग विंग्स होते हैं कि जी वो बर्ड के नाम तरह की व्हीकल होगी और उसके विंग्स जो है वो फ्लैप करते हैं. एंड देन द रोटरक्राफ्ट जिसको कि हम क्वाडकॉप्टर्स भी कहते हैं, दे आर हेक्साकॉप्टर्स आल्सो. So these are the configuration which are used for the aerial vehicles or quadcopters. Domestic robots में मैंने आपको जैसे बताया था अभी बहुत शुरू में भी बात हुई थी. So this is vacuum cleaner and this is a wheelchair which is assisted wheelchair which is used by the patient to move around. और even इसके ऊपर एक आर्म भी लगा हुआ है. सो अगर उसके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें मोबिलिटी नहीं है, सो ये आर्म जो है कैन हेल्प हिम
और हर whosoever is the patient, तो उसको वो हेल्प कर सकता है इवन पानी पिलाने में, खाने में. सो ये असिस्टिव जो या डोमेस्टिक रोबोट्स हैं, they are in action, they are being made, they are being used, they are in action at the moment. So you can Google them on the internet also, you can find out a lot of information about these kind of robots जो कि डोमेस्टिक. मैं आपको बहुत थोड़ी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ. There can be many more जो कि आपको इंटरनेट पे मिल सकती है. What I need to do, I need to ask you to go through this research. ये इसको काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा. ये वही गार्शिया वाली जो मैंने इनिशियल आपको दिखाई थी, जहाँ से मैंने वो एक आपके लिए उठाई थी पिक्चर. So please go through this research. It's a reading assignment, and you do not need to submit it to me. But मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि at your own please make a brief of 2 pages about this research. एक पॉइंट फॉर्म में इसको लिख लें कि यार क्या क्या हुआ, कैसे किया और क्या उसका इफेक्ट है. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस रिसर्च एंड यू विल फाइंड आउट कि कैसे रोबोटिक्स जो है वो इवॉल्व हुई और अब हम कहाँ पे इस वक्त जो है वो खड़े. ठीक है जी. सो दिस इज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू रीडिंग, टेक द रीडिंग असाइनमेंट एंड रीड दिस रिसर्च. इसको गूगल पे डालेंगे तो गूगल स्कॉलर पे डालेंगे तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस रिसर्च. जी, this is the last slide for today. So I would request you that if there is any question, so I would like I am available to answer, please. If there are no questions, so let me just take the let me just first switch off the recording.